इसके अलावा देखें टाइम का आपको पेंडुलम का पता होना चाहिए, बहुत कॉमन एटीपी में बहुत ज्यादा आता है पेंडुलम के हवाले से। तो पेंडुलम के हवाले से ये पता हो कि ऑसिलेशन किसे कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन इट गोज टू वन एंड एंड कम्स बैक, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ठीक है। And how do you find time for one oscillation? So basically what you do is you time for let's say 20 oscillation। ठीक है, आप कोई वैल्यू उसकी फाइंड कर लेते हैं 13.56 whatever, then what you do is you repeat। ठीक है, आप T2 भी फाइंड कर लेते हैं, 15.17 आ रहा था, फिर आपके पास 14.15 सेकेंड्स। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं कि यू फाइंड एवरेज, आप सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करते हैं और देन यू फाइंड टाइम पीरियड विच इज जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन थे उस पर डिवाइड करते हैं। तो जीसी के एटीपी में बहुत ज्यादा आता है ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के हवाले से, और आईजीसीएसई के एमसीक्यूज में ये जरूर आता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये फाइनल गो है टुवर्ड्स दीज टॉपिक्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें एक और क्वेश्चन जरूर आता है कि जब आप टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, ठीक है, वो आपसे ये जरूर पूछते हैं कि इन तीनों का आप जरा अभी ट्राई करें, इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है वैसे, फाइंड द एवरेज एंड डिवाइड बाय 20 करें, व्हाट डू वी गेट? अच्छा, कैलकुलेटर्स शुड बी विद यू पीपल ताकि आप लोग थोड़ा सा क्विक रहना है। अच्छा, आई डोंट वांट टू स्पेंड अनदर डे ऑन दिस चैप्टर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करके पास्ट पेपर्स पे आप लोगों ने फोकस करना है। सो व्हाट डू वी गेट इफ वी ऐड द 3 टाइम्स डिवाइड बाय 20 करके 0.715, लेट्स से आपने कर लिए। अच्छा, सो दिस इज व्हाट दे विल डू कि सादिया आपने 0.71 आंसर दिया है, अगर 5 है एंड यू वांट टू राउंड इट ऑफ टू 0.72, उन्होंने लेट से आपको कहा है कि यूज 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन यूजुअली ये करते हैं कि व्हाई डिड द क्वेश्चन या व्हाई डिड द, वहां पे डिस्क्रिप्शन होगा कि व्हाई डिड द स्टूडेंट नोटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर वो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई डिड यू गिव योर आंसर या व्हाई इट वाज सजेस्टेड टू गिव आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, आपने आंसर एटीपी में ये करना होता है, सिंस गिवन डाटा इज इन 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको रॉ डाटा भी कहते हैं। तो एटीपी के क्वेश्चन ये आता है तो आपने उसमें बताना होगा कि सिंस given data is in 2 decimal places, the final answer should also be in 2 decimal place। ठीक है, तो ये एक आइडिया है जो कि बाज वक्त आ जाता है। सो एनीवे, लेंथ, टाइम ये पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम के हवाले से ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो अगर ये केस हो तो आपने लोअर मेनिस्कस लेना है, अपर नहीं लेना। और अगर कुछ मरकरी टाइप का कोई लिक्विड हो जिसकी सरफेस टेंशन इस तरह होती है कि वो एजेस पे थोड़ा सा नीचे होता है, इस केस में अगर ये 2 रीडिंग्स हैं तो आपने ऊपर वाला अपर मेनिस्कस लेना होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लिक्विड लाए। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में ये बेसिक पॉइंट है जिसका आपको पता होना चाहिए। लेंथ, टाइम, वॉल्यूम के अलावा जो इस चैप्टर में डिस्कशन होती है that is related to scalar and vector। Scalar and vector obviously बेसिक आइडिया तो काफी पुराना है इसका कि स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन लिस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइम है, मास है,
और क्या है? Energy, speed, distance, and so on. We don't need direction. Vectors में, common vectors में आता है displacement, velocity, force is a very common vector जो कि डिस्कस होता है. तो ये बेसिक लिस्ट तो आपको आनी चाहिए. Acceleration is very common. ठीक है, तो ये आपके पास स्केलर और वेक्टर में ये पता होने चाहिए. बात आ जाती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की. एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं. हेड टू टेल रूल इज वन वे टू ऐड टू वेक्टर्स. मैं अगर आपसे कहूं कि एक वेक्टर ये है 700 न्यूटन और एक जो है वो ऐड करना है हमने 500 न्यूटन which is right now at 40 degrees, let's say. ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक you redraw to scale, मतलब 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के साथ आपने हेड और टेल को ज्वाइन करना है. You're not allowed to change the direction. Dotted line you can always draw 40 degrees, तो ये 5 सेंटीमीटर लाइन और ये 7 सेंटीमीटर लाइन. So according to head to tail rule आपने क्या करना होता है, दोबारा बनाना है. ठीक है, लेकिन हेड टेल को ज्वाइन करना है. इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें. हेड टू टेल में आपने हेड टेल को ज्वाइन करना है विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन. ठीक है. Sir, what about the resultant force? Yes, so the first part is you have to join head to tail. Is the first part clear? अच्छा. Yes, sir. अच्छा, resultant का keep in mind the statement. अच्छा, I usually write all these statements, but since I want to get done with the first chapter today, I'll upload the recording as well. You may refer to these recordings later on. The statement is resultant is drawn from tail to head to complete the triangle. ठीक है, like if I want to complete this, it starts from tail of one vector. So this is called tail, this is called head. So these two are linked over here. In order to complete a triangle, I have two options. Either to draw a line like this, but I'll be going from head to the tail. This is incorrect. I should go from tail to the head, measure this length, okay, and convert length into newtons according to scale. Is this clear? You need to draw a vector from tail to head so that the triangle is complete. This is the resultant, and we usually denote with double arrows, but it's up to you. An important point is, now what about the angle of resultant? Okay, should this be the angle or should this be the angle? Well, the angle is always with the tail of resultant. So this is the angle with horizontal or vertical, it's up to you. Okay, either you measure the angle with x-axis or y-axis, it's up to you. Okay, you have two options for the angle. With the tail, you measure this angle and just use protractor and write the value. Head to tail में basic उसमें कोई question है? नहीं, Inam, as you asked, will the angle be same? The angle won't be same, but this is what you have to write. If you measure the angle with x-axis, so you write 2 horizontal. In your marking scheme, there will be another option. If someone has measured this angle theta 1,
So they will have to write two vertical. Both will score equal marks. Sometimes they specify, if find the angle with horizontal, then you have to, but do not find angle with head or something. The angle should be with the tail of resultant. जितने भी doubts हैं, make sure you clarify. Head to tail के हवाले से, if you have any doubt, मुझे बता दें. And it can be literally in any direction. देखिए बाज़ों को आपसे कहेंगे कि रिवर जा रहा है, या आपसे ये कह देंगे कि एक स्लोप है, पे बस है, ये उसका वेट है, and there are few people who are applying a force. The question is find resultant, and this angle is given, which may be 30. So I have to redraw according to whatever scale they have given. So I'll draw weight first, then I'll draw the tail of force F. You can always draw a dotted line because your paper is blank. You can always draw axis wherever you want, but it should be dotted. They'll never give you score or deduct mark for the dotted line at 30 degrees. How do I complete the triangle? Should the arrow go down or up for the resultant? You need to be active. अच्छा मुझे बताएं इसका resultant किस direction में होगा? Resultant is drawn from tail to head. Tail to head, down. Tail to down, exactly. So this is the basic concept of head to tail rule. Should I move forward to another rule? We'll talk about parallelogram rule. Now in this case, what we do is, if you are given two vectors, it may be anywhere. Let's say a force. Actually, they'll give you some lengthy discussion. Okay, there was a signal and it was attached with two wires, whatever. I'm not interested in whatever the object is. I'm interested in the direction of two forces. So whatever their discussion is, keeping that aside, there's the force which is maybe at an angle of 50 degrees, having a force of whatever, 750 Newton. And there's another force which was of 800 Newton and acting to the left. Now I want to add them, but I want to add them using parallelogram rule. So there's no need to use compass, etc. Just some of students I've seen, they start using compass. That only makes it more confusing. What you do is you redraw the two vectors according to scale. Again, I'll go for 100 Newton to be represented by 1 centimeter. But this time you need to join the two tails. So if I draw an 8 centimeter line to left, I will have to join the tail, pick this vector, first measure 50 degrees, draw a 7.5 centimeter line like this. Okay? So it is in contrary to head to tail. In head to tail, we had to join head tail and then draw resultant from tail to head. Over here, we have to draw such that the two tails need to be joined. And then I need to draw parallel vectors. You can draw using dotted line. So an 8 centimeter line to the left and a 7.5 centimeter line almost to the right. So you just copy paste the same vectors and you complete a parallelogram. So it's the same 8 centimeter line, same direction, same 7.5 centimeter line. Is the first part clear? You need to just copy paste the vectors on the opposite side, so you get a complete two opposite and parallel sides. Do we have any question over here? Yes, Inam, it's better to. Achha, theek hai. Yes, Inam, basically you need to use both rules because sometimes in MCQ they have already used a rule.
So then you don't have a choice. And in case of theory, it's up to you. I would suggest go for head to tail. It's much easier and quick. Acha, now you need to listen to the statement of parallelogram rule. The resultant is drawn not as a diagonal. Some students memorize just a diagonal. It's not always, because we have two options for diagonal, one going to right, one going to left, or maybe whatever the direction is, one is short, one is lengthy. The statement is resultant is to be drawn from two tails to the two heads. So this is point one is where the two tails meet. Point two is where the two heads meet. Over here we have head tail, so we're not interested with that in these 2 points. So we draw a vector from two tails to the two heads. This is the resultant vector. There's no other option. And if I were to find the angle, again I have two options. One option, x-axis is there, but you have to draw with the tail of the resultant, so you find this angle. Okay, the angle of a vector should always be with its tail. ये ना हो कि आप कहें कि ये कोई एंगल है, ये तो रिजल्टेंट के साथ ही लिंक नहीं है, ये एंगल्स ना फाइंड करें. टेल के साथ जो एंगल है that is to be the angle, ठीक है, with x axis. If a student wants with y axis, well, it's up to you. You can draw an imaginary y axis and find this angle as well. It's up to you. Both are acceptable. But sometimes one of the vector is very obvious, like one of the axes is already there, so we'll draw with x axis. Okay? So this is what the parallelogram rule is about. What we'll do is let us shift to the worksheet, I would say. Should we move on to the worksheet? So these questions are from 2020. Okay? But these are not enough. You need to, whichever topical or whatever you have, just make sure कि chapter आपका clear हो जाए. So इसमें आपके पास first अगर आप देखें, a heavy nail is fixed firmly to a wall. It is pulled by a string at 40 degrees. The nail does not move. ठीक है? Three forces acting on the nail. इस question का देख लें. Which diagram represents the three forces? अच्छा, sorry. So basically देखें, आप यहाँ पे, as I mentioned, कि अच्छा, three forces act on the wall, nail, ठीक है, weight है, tension है, और force are exerted by the wall, ठीक है. Which diagram? अच्छा, यहाँ पे एक point है कि this question is slightly different from what they have been asking. ये पहली दफे इन्होंने थोड़ा सा इसको change किया है. Change इन्होंने ये किया है कि there is no resultant force, ठीक है. कुछ points जो है ना आप लोगों ने past paper से सीखने हैं. देखिए, ये पॉइंट अब वैसे तो हायर क्लासेस में हम बताते हैं, लेकिन इस तरह स्मॉल पॉइंट्स आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है, ठीक है. सो यू नीड टू नोट दिस पॉइंट कि हेड टू टेल का एक फायदा है. हेड टू टेल रूल कैन बी अप्लाइड ऑन मोर देन two forces at a time. ठीक है, आप इस पे तीन फोर्सेस भी लगा सकते हैं. लेट्स से ये आपके पास नेल है, ठीक है. सो वी हैव थ्री फोर्सेस जो इस वक्त लग रही हैं, ठीक है. वेट भी है, टेंशन भी है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है. तो तीन फोर्सेस को इन्होंने हेड टू टेल के साथ ऐड किया है. अब इफ आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसके एक दो तरीके हैं हम इसको अगर सॉल्व करें. एक तो ये है कि इफ यू रिकॉल, मैंने कहा था कि आप व्हाटएवर डायरेक्शन, वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है,
So you will have to check कि सारे weight downward है, कोई upward तो इन्होंने नहीं है. So on the basis of weight, I cannot reject any option. ठीक है. Tension जो pull है वो to the right है. Can I reject any option? Right or upward है. B, sir. B. B and D. B and D. B and D I'll reject. ठीक है. So now there is a slight confusion between A and C, क्योंकि अब इसमें R की बात आ जाती है कि whether R is to the left or is it to the right. Sir, I think it's ठीक है. C. C देख लेते हैं. ठीक है. थोड़ा सा आप लोगों ने अब इस पे दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा. मुझे ये बताएं before we go towards R, whether R is to the left or whether it is to the right, मुझे ये बताएं इस वेट और टेंशन का रिजल्टेंट किधर होगा. फॉरगेट अबाउट रिएक्शन फोर्स. इन दोनों का अगर मैं पैरेललोग्राम रूल यूज करूं, isn't the resultant force will be somewhere to the right side? अगर मैं Yes. इसका रिजल्टेंट, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है कि इसका रिजल्टेंट ऑलमोस्ट टू द राइट हो. नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिजल्टेंट फोर्स इज टू द राइट, व्हिच मींस कि अगर हम इसको डायनामिक्स के साथ लिंक करें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो टू द राइट है. बट दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, राइट? इट्स फर्मली फिक्स्ड. इसको कैंसल आउट करने के लिए इन विच डायरेक्शन डू वी नीड अ फोर्स? Left side. Left. In the opposite direction. In the opposite direction. ठीक है. So now we have an option. We need a force, a reaction force that should cancel out the resultant force. So A is तो the what answer. do you, तो फिर A आंसर है आप. सर इसे आंसर फाइंड करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है ना सर. हाँ सर अगर हम देखें सर ये सर ए के सर सर टी का सर टेल है और डब्ल्यू का हेड है. हेड टू टेल सब पर हेड टू टेल अप्लाई हो रहा है और बी सी डी में नहीं हो रहा सर. हाँ एग्जैक्टली. ये मैं एक और पॉइंट लिख लेता हूँ. If head to tail make a closed triangle, object will be at rest. देखिए क्लोज ट्रायंगल तो सारे हैं. ये हेड टेल अटैच्ड है, हेड टेल अटैच्ड है, हेड टेल अटैच्ड है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो टेल्स अटैच्ड हैं. तो ये और यहाँ पे दो हेड्स अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे हेड टू टेल प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हुआ. ठीक है. लेकिन ये पॉइंट जो कि हम थोड़ा सा हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ाते हैं, तो इसलिए आई डिडंट वांट टू डायरेक्टली गिव यू अ शॉर्टकट. जो अवेलेबल नॉलेज है ओ लेवल्स का, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यूजिंग दैट या IGCSE का. ठीक है. बट वट एवर सूट्स यू. अगर आपको कोई इजी मेथड मिलता है, डू गो फॉर इट. अच्छा, तो ये वेक्टर्स का ये वाले भी ट्राई कर लें. पेज नंबर के साथ आप मेंशन कर लें कि ये अगर होता है कि नहीं. 0 to 90 पे एंगल बिटवीन 3 and 4 न्यूटन, पहले 0 था, फिर जो है 90 है, तो इसका देख लें कि कौन सा पॉसिबल है. What is measured using micrometer area? ये तो खैर बहुत सिंपल है. Length which is a vector, ये देख लें. ठीक है. I'll quickly go through the worksheet. Time का डिफरेंस फाइंड करें. ठीक है. ये पेंडुलम वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि 50 स्विंग्स हैं, तो ये 2 मिनट्स को सेकंड्स में कर लें, तो ये 120 प्लस 40 160, उसको 50 पे डिवाइड कर लें. अच्छा, ये फिर आप लोगों के ATP के क्वेश्चंस हैं जो इसी चैप्टर से ही मेजरमेंट्स के जो आते हैं. ठीक है. सो ये वैल्यूज जो हैं वॉल्यूम के, ये आप फाइंड कर लें. ठीक है.
केस के क्या आते हैं, टोटल वॉल्यूम बिफोर, कंबाइंड वॉल्यूम। अच्छा, ये जो फिर सजेस्ट वाले होते हैं ना, दिस नीड्स अ बिट ऑफ अ प्रैक्टिस कि आपने किस केस में कौन सा सजेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक लिख लें कि whatever the question is, I haven't read one possibility for difference between two answers in B part 2। वो कह रहा है कि इंडिविजुअल जो है वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम और कंबाइन करके कम हो गया। तो एथेनॉल का याद रखें, थोड़ी सी केमिस्ट्री चाहिए, वोलेटाइल है काफी, ये इवापोरेट हो जाएगा। तो उसका आप बता दें कि सम लिक्विड माइट हैव इवापोरेटेड, इसलिए वॉल्यूम कम आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह के सजेस्ट वाले क्वेश्चंस आप देख लें इसको, how to go about it। अच्छा, the other question I haven't read the entire question, लेकिन शायद वो यहाँ पे आपसे रीडिंग मांग रहा है। माइक्रोमीटर को कैसे रीड करते हैं, कुछ आइडिया है इसको रीडिंग क्या है? कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू राइट नाउ, इसकी क्या होगी? मेन स्केल क्या है? मेन स्केल मैं बता देता हूँ, इट इज द लास्ट डिवीजन दैट इज विजिबल। सो ये 0.5 होता है जो नीचे वाले होते हैं, और ऊपर वाले कंप्लीट डिजिट्स होते हैं। तो इस वक्त आपको जो डिजिट नजर आ रहा है वो 2 है। 2 है। एग्जैक्टली, इट्स 2 mm। ठीक है, एंड द डिवीजन दैट कोइंसाइड्स इज द थिम्बल स्केल। इस वक्त 14 कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो थिम्बल स्केल इज 14 बट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये 0.14 हो जाता है, क्योंकि मिलीमीटर्स में हमेशा 0.01 होता है। तो फाइनल वैल्यू इज 2.14। ये ना हो कि बस आप इमीडिएटली ये वैल्यू लिखें, क्वेश्चन को आपने गौर से रीड करना है। यहाँ पे हाइट एज, अच्छा यहाँ पे ये आपने लिखना है 2.14। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन आएगा, एवरेज टाइम, स्पीड। तो एटीपी में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, 2.14 हमने भी फाइंड किया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसमें आपने अगेन यू हैव टू एवरेज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था, why the average is not recorded more than 2 decimal places because given data is in 2 decimal place। तो ये आपने एटीपी में ये सॉल्व करते हुए इस चीज को ख्याल रखना है। ठीक है, ग्राफ है। ठीक है, सो ये आपके पास इसकी वर्कशीट है। ठीक है, तो आज आप लोग ये कर लें कि इसकी वर्कशीट कंप्लीट कर लें। ठीक है, थ्योरी में एज सच चैप्टर 1 से कुछ नहीं आता। सो कल हमारा टारगेट ये होगा कि I'll upload another mass weight and density worksheet। उस चैप्टर में तो कुछ नहीं है, बट I'll start kinematics tomorrow। ठीक है, बट यू पीपल नीड टू कैच अप विद द पेस। तो आज आप लोग ये कर लें कि ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लें। ठीक है, और चैप्टर 1 से एटीपी से जरूर आता है, तो एटीपी के क्वेश्चन साथ साथ कर लें। ठीक है, Sir, how long टाइम will this session be? जी, Sir, how long will this session be? I'll try to wind up in a month's time, ताकि एंड में कुछ आप लोग टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें। सही है सर। ठीक है, लेकिन इट विल बी ओनली इफेक्टिव इफ यू सॉल्व, रिवाइज जो गिवन नोट्स हैं, या ये तो नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे ये वाले, ये तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इट विल बी मोर इफेक्टिव इफ यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। वर्कशीट आप लोगों ने इसको बिल्कुल इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है,